Hello students, I hope you all are fine. So today I have brought the lecture on the demand of some of the students. They asked to upload the lecture on the basis of the PYQs and some conceptual questions of physics. So today we will discuss about the chapter 1 electric charges and field, complete PYQs and board oriented plus some competency based questions. Okay, board oriented questions, competency. Then we will be discussing some MCQs and case-based questions, how to handle that, and how to solve in board exam. Okay. So let's begin with the first question, class. See, a small metallic sphere S of charge plus Q is placed exactly at a point midway between 2 point charges, that is A, which consists of charge plus Q, and B, which consists of charge plus Q, same charges, where capital Q charge is very greater than small q. If the sphere is if the sphere is slightly displaced towards charge A and released, then what will happen? It will move further towards A, it will move towards B, it will oscillate about its original position, it will not move at all. What will be the answer? Suppose this is the sphere. We take 2 points here. This is A and this is B. In midway, there is a charge placed in sphere, that is plus Q. At A there is charge plus Q, at B there is a charge plus Q. है ना? So what will happen? You know, like charges, they create a stable equilibrium. A and B, they both are the like charges. A and B, at these 2 points, there are the same charge and they will repel each other. So they will make a stable equilibrium. What they will make? A stable equilibrium. Then what will happen? If you push a charge towards something that repels it harder, it will get pushed right back to the center, right? This is plus Q and this is also plus Q. They will repel each other. So where plus Q and these capital plus Q charge, where it goes when they come together, when they come towards each other, what will happen? This plus Q, when this plus Q will move toward this, it will ultimately go back at the center position. Okay. In case it may ask in exam that if it move towards B, then what will happen? It again come towards the center position. So our answer will be, it will oscillate about its original position. Okay. Done. See the next one. See the next question. Try it. So the question is, the figure shows 3-point charges kept at the vertices of triangle ABC. The net electric field due to this system of charges at the midpoint M of BC will be. There are 3-point charges. Okay. At B there is minus Q, at C there is minus Q, at A point there is a charge 2Q. Okay. And this is the midpoint M. Okay. If this is the midpoint, from there we will get one clue. If this is the midpoint, then BM equals to L, and in the same way MC also equals to L, right? Now तो पता लग गया आपको. So this is positive plus 2Q. You know, when there is a charge positive there, what will happen?
This is plus 2q charge and this is minus q. And this m is the midpoint, right? And we have to check the electric field due to the system of charges at the midpoint, है ना? At the midpoint m, either say the electric field, what will be the direction of that? Towards minus q. आपको पता है बेटा, if the charge is negative, then the direction will be towards the negative charge. If there is a positive charge, then the direction is opposite to that. So here it will towards C point and it will towards B point due to the negative charge, right? Yes or no? Yes. Are you able to get it? Done. इतना पता लग गया? Then उसके बाद what we have? Can we calculate the magnitude of electric field? You know that if there is a negative charge, the electric field direction is towards that negative charge, right? And it is a positive charge. So where will be the resultant? If there is a positive charge, then the direction will be like this, outside, away from the positive charge, na? Direction of electric field. You know this is L root 2 and this is L. You can find the value of AM. Pythagoras theorem. AM square is AB square minus BM square. What is the value of AB here? L root 2. What is the value of AB? L root 2 square. What is the value of BM here? L. We will be having there 2L square minus L square. We get L square and L. So value of AM is L. Value of AM is L. So can we find the net charge? Yes or no? Can we find the net charge or not? Now you know MB is L and MC is also L. So at point B and C, electric field is same. So it will equal to Q upon 4 pi epsilon naught. What is the distance? L, है ना? L square. Done. And it's equal and opposite. If it's equal and opposite, when we try to add them, then it will become 0, right? Because it's equal and opposite. Done. So EA equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2Q upon L square, which is equal to Q upon simplification 2 pi epsilon naught L square. ठीक है? Along AM. So Q upon 2 pi epsilon naught L square pointing along AM is our answer. Done? Is that clear to everyone? Let's move to the next question now. So the next question is, a conducting wire connects two charged metallic spheres A and B of radii R1 and R2 respectively, right? Distance between the spheres is very large compared to the radii. The ratio of the electric fields EA and EB at the surfaces of A and B will be. Okay, now we will find the electric field ratio. What is the formula of electric field? E equal to KQ upon R square, right? If we apply this formula to calculate the ratio and we suppose that the charge is QA and QB on both spheres and radii are R1 and R2, we are not able to cancel out QA and QB with each other, है So we have to find some logic. We have to apply some another formula also into it.
so that we can get our desired answer, because the answer is given in the form of R1 and R2 in all the options, right? We have the formula for V, potential, electric potential, that is KQ upon R, right? If I equate both the potentials, because both the spheres are conducting spheres, and we can have that potentials to be equal, है ना? So let's suppose KQA upon R1 equals to KQB upon R2, right? Radii R1 and R2 already given, तो मैंने charges QA QB suppose कर लिया, ठीक है? K and K cancel out. From here I can get QA upon QB equals to R1 upon R2. आ गया? Done. चलो अभी तक देखो. We have to calculate the ratio of the electric field. K QA upon R1, ठीक है? स्क्वायर भी होता है. K QB upon R2 स्क्वायर, ठीक है? K कैंसल आउट, इधर आ रहा. So EA upon EB equals to QA upon R1 square into R2 square upon QB, है ना? And what is the value of QA upon QB? This one, right? Put this value here. R2 square upon R1 square, QA upon QB की जगह R1 by R2 equals to R2 upon R1. ठीक है बेटा? R2 upon R1. B option is correct. Done. MCQ was very easy. Question was easy. Able to do. Done. Let's move to the next one now. देखो बेटा PYQs है, ऐसे ही MCQs आते हैं. Board oriented competency based questions mix I am doing here with you. Side by side try to solve yourself. मेन बात है कि आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए बेटा. बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको पता होना चाहिए. उधर डिराइव थोड़ी करोगे आप, ठीक है? कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप कंसिस्टेंटली रोज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे देन यू विल एबल टू सॉल्व दैट. केस स्टडी करते हैं. चलो इधर आओ. केस स्टडी, इसमें पोटेंशियल का भी थोड़ा है. नो प्रॉब्लम, मैंने उठाई ये वाली, तो वेरी इजी, वी विल डिस्कस इट. So let's discuss this case study. See, the electric potential and electric field E are closely related concepts, है ना? In electrostatics, the electric field is a vector quantity that you know, which represents the force per unit charge. Whereas electric potential is a scalar quantity that represents potential energy per unit charge at a given point in space. Electric field and electric potential are related by the equations ER equal to minus dV upon dr, E vector equal to ER r cap. That is, the electric field is the negative gradient of the electric potential. Okay, electric field is the negative gradient of the electric potential. This means electric field points in the direction of decreasing potential, and its magnitude is the rate of change of potential with the distance, right? Electric field is the force that drives the unit charge to move from higher potential region to lower potential region. Electric potential difference between 2 points determines the work done in moving a unit charge from one point to another point. जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज को मूव करोगे, that will be the potential difference between 2 points, है ना? That determines the work done between that 2 points, through which we calculate how much work is done from one point to another to move a charge, है ना? So there is some representation. A pair of square conducting plates having sides of length 0.05 meter and arranged parallel to each other in xy plane. They are 0.01 meter apart. Okay, they are 0.01 meter apart
along z axis and are connected to a 200 volt power supply as shown in the figure. An electron enters with a speed of 10 raised to power 3 into 10 raised to power 7 meter per second. Speed is given to you, and this power supply 200 volt horizontally and symmetrically in the space between two plates. Neglect the effect of gravity on the electron. अच्छा ये सारा दिया है उन्होंने. We have read that. ये हमें जो नीचे वाली वैल्यूज उससे हमें मतलब और एक फॉर्मूलाज जो यूज होंगे हमारे. अब देखो electric field in the region between the plates. How can we calculate the value of electric field here? You know the formula? Yes. What is the formula to calculate the electric field? Okay. So what is the value of Hanji? What is the value of potential 200 and D? Distance is 0.01 meter. Upon solving, you will be getting 2 into 10 raised to power 4. पॉइंट उड़ाया बेटा 100 आ गया है ना. So we get 2 into 10 raised to power 4 volt per meter. Okay. Our option either this or this. And we have to check whether negative sign will be there or positive sign will be there. We will check now. Okay, see. The top plate is connected with the positive terminal. The top plate is connected with the positive terminal, right? And the bottom plate is connected with the negative terminal. Bottom plate is connected with the negative terminal. See carefully. Okay. And electric field lines always points from the higher potential to lower potential. Higher to lower potential, right? And looking at the coordinate axis, we see that provided in the image, what do you conclude? Plus z axis points upward. Plus z axis points upward. If plus z axis points upwards, then it is pointing towards a minus k cap direction. Pointing towards a minus k cap direction. So negative sign will be there. D option is your correct answer. Done. Hanji. This was in your xy plane. Z axis in the upward direction, which is pointing towards a minus k cap direction. है ना. ये इधर k cap नीचे upward direction. तो negative. Done. In the region between the plates, the electron moves with acceleration. Now next question class. See carefully. Let's rub that. In the region between the plates, the electron moves with an acceleration. A is given by. अच्छा, next question देखो बेटा. In the region between the plates, the electrons moves with an acceleration given by. We have to calculate the acceleration here, right? We know the formula. F equals to QE. हाँ, पता ना आपको? Where your charge? Charge on electron. You know what's the charge on electron? Put the value. Minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 Coulomb. Right? What is the value of electric field? देखो ऊपर वाला आंसर आएगा तो वही आप नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हो. माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर और के कैप जो भी है आपके साथ वो भी 8. इंटू माइन. अगर ऊपर वाला पार्ट नहीं सॉल्व हुआ तो नीचे वाला इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. देन साथ में डायरेक्शन के कैप यू हैव टू शो. अपॉन सॉल्विंग देखो पावर कैसे एडजस्ट करनी है. आपकी कैलकुलेशन नहीं आपसे हो पाती. देख लो 1.6 इंटू 2 माइनस माइनस पॉजिटिव
10 रेस्ट पावर -19 उधर 10 की पावर 4 क्या आ गया 10 की पावर -15 डन. This is 1.6 into 2 that is 3.2 into 10 raised to power -15 डन. ठीक है बेटा. न्यूटन के कैप ये आपकी फोर्स आई है अभी. ठीक है ये फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज यू नो एफ इक्वल टू एम में तो ए इक्वल टू एफ अपॉन एम. फिफ्टीन. What is the mass of electron 9.1 into 10 raised to power -31 kg. राइट. इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर. सॉल्व करके बताऊंगे कर लोगे बेटा. 9132 0.919 का रफली टेबल पढ़ लो बेटा. ऐसे कैलकुलेशन ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं. जैसे 91 इंटू 3 करके देखो यू विल बी गेटिंग योर आंसर 273. 0.3 ठीक है. जीरो लगाया. देन यू नो 96 54 95 45. चेक कर लो इस पे 5 पे ना आंसर देखो 35 कुछ समथिंग यही आ रहा है ना. छोड़ दो उसको ऐसे. सो 0.35 इंटू. अब देखो 10 की पावर -15 नीचे पावर ऊपर आके माइनस माइनस प्लस. कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चे कैलकुलेशन भूल जाते हैं. पावर को कैसे एडजस्ट करना है इन लोअर क्लासेस हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं वो बच्चे भूल जाते हैं. ठीक है. तो ट्राई टू रिकॉल. बेसिक कैलकुलेशंस आपकी वीक हो रहती है इसलिए आपके न्यूमेरिकल नहीं निकलते आंसर आपसे. समझ आई बात. उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो. टीचर ने न्यूमेरिकल नहीं कराया क्लास में ये नहीं कराया. कितने न्यूमेरिकल टीचर डिस्कस कर लेगा क्लास में. आप अपने आप से पूछो आपने कितनी कोशिश की है. समझ आई बात. अब पावर एडजस्ट करो. क्या रूल होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमारा डिजिट होना चाहिए. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. नॉन जीरो डिजिट ये जीरो है 3 के बाद. तो एक स्टेप हमारा पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ. जितने स्टेप्स हम आगे पॉइंट को लेके जाएंगे उतना ही हम पावर में क्या कर देंगे -15 आ गया. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायरेक्शन क्या चल रही के कैप. ठीक है. चेक योर आंसर. डन. बी ऑप्शन इज योर आंसर. ठीक है बेटा. चले आगे. चलो वेट कर लेते हैं. चलो पहले कंप्लीट कर लो फिर नेक्स्ट करते हैं. चलो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आर लेफ्ट. चले नेक्स्ट करें. चलो ये देखो. Time interval which an electron moves through the region between the plates is. Now you have to calculate the time interval. How can you calculate the time interval? Time equals to distance upon speed, right? And what is the distance moves through the region between the plates? हाँ 0.05 मीटर है ना. given 0.05 मीटर. स्पीड ये देखो बेटा 0.05 मीटर गिवन. Speed was also given to you 3 into 10 raised power 7 meter per second. 3 into 10 raised to power 7 point 10 की पावर 2 we get 5/3 into 10 raised to power 9 नीचे ऊपर आगे -9 हो गया है ना. 1 point what you will be getting then 1 point. हाँ जी बेटा. what is your answer. yes 1.67 into 10 raised to power -9 seconds.
सी ऑप्शन इज योर आंसर। ये तो बहुत इजी था। इसमें बेटा पिछले वाले जो आपने क्वेश्चन किया उसका कोई लिंक नहीं है, इंडिविजुअली हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूला दिमाग लगाना क्या करना है। इजी। नाउ द बी पार्ट। सी द बी पार्ट नाउ। We have to calculate the vertical distance of electron that travels through the region between the plates, है ना? We have to find y equals to, we will apply the relation here, uy plus half at square, right? We know that initial velocity is zero along the along the vertical path, right? So y equals to uy is zero, half. What was the acceleration we have calculated? Acceleration beta 3.5 into 10^15 है ना? 3.5 into 10^15 एंड टाइम यू हैव कैलकुलेटेड है ना? कितना निकाला था? 1 पॉइंट, हाँ जी, 67 इंटू 10^9 -9 होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना। 1/2 35/10। ठीक है बेटा, 10^15 167 इंटू 167 10^-9 इंटू 10^-9। ये पॉइंट बेटा 100 आ रहेगा दो बार नीचे, फिर दो बार 167 इज मल्टीप्लाइड, डेसिमल रिमूव्ड। अब पावर्स को अरेंज करो। कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है, आपको कैलकुलेशन नहीं पेपर में करनी आती, इसीलिए फिर रॉन्ग हो जाती है आपकी कैलकुलेशन। देखो मुझे पता है आप कईयों को कैलकुलेशन आती है, लेकिन कईयों को कैलकुलेशन करनी आती ही नहीं है। कैलकुलेटर यूज करते हो इसलिए आपकी कैलकुलेशंस वीक हुई हुई हैं। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 10^15, यहाँ 10^-18, 15 - 18 कितना हो गया बेटा? -3। 2 इंटू 10^1 2 3 5 zeros, 10^5। अब ऊपर देखो कटिंग होती है, 2 1 यहाँ पे कर लो, चलो 84 कर लो। नाउ मल्टीप्लाई 35 इंटू 84 एंड 67, देखो क्या आ रहा है? 35 इंटू 84 इंटू 167। मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। समझ आई बात? मल्टीप्लीकेशन थर्ड फोर्थ में क्यों सिखाते हैं आपको, सेकंड थर्ड में? कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। आपने उसको ही अपना कैलकुलेटर को कर लिया है, साथी बना लिया, और पेपर में भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और बाद में कहते हो मार्क्स कम आ गए हैं। न्यूमेरिकल नहीं करवाए, टीचर ने नहीं करवाए, टीचर का नाम लगा देते हो आप। इतना नहीं पता, खुद से नहीं किए। ये देखो 5845 आ गया है। अब 84 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 = 24 16 ते 18 आ गया। 23 48 32 36 आ गए। 64 थे 67 40 और 46 दे, ठीक है। 0 8 9 देख लो, 490980 आया है। लिखो यहाँ पर 490980। 10 की पावर बेटा नीचे 5 है, ऊपर -3 है, तो -8 हो गया। ठीक है। अब इसको देखो अरेंज कैसे करना है। इधर कर ले, चलो इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको अरेंज देखो कैसे करना है हमने। 4 पॉइंट यहां पर लगाना है मैंने, 90, बाकी रहने दो। 10 की पावर क्या आएगी, देखो कितने डेसिमल हम पीछे गए हैं, चेक करो इधर। यहां से आप ये देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप्स। क्या आ रहेगा देखो इधर,
10 की पावर, कितने स्टेप्स पीछे गए? 5 स्टेप्स। 5 स्टेप पीछे 5 ऐड कर दो, 10⁻³ अब आपको पता है आपका ये मीटर में है, आंसर मिलीमीटर में है। मिलीमीटर में करने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 10⁻³। ये 10⁻0 हो गया, तो आंसर क्या बचा आपका? 4.9 mm। आ गया आंसर? हम्म, ये देख लो। डन। देख लो बेटा, क्लियर है? वेदर इट्स क्लियर और नॉट, देख लो।